cost of bonds. This is the first part of our discussion on the topic. This is the course of financial management and this is 195th module. Cost of bonds is the cost that a company has to bear for the bonds that it has issued. But first, what is a bond? A bond is basically a debt security, and that debt is a public debt. Public debt क्या होता है? यानी अगर कोई कंपनी लोगों से डेट की शक्ल में, लोन की शक्ल में डायरेक्टली पैसा लेना चाहे किसी बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को इन्वॉल्व किए बगैर, तो उसको हम बॉन्ड कहते हैं. इसके अंदर बॉन्ड का एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और बॉन्ड की बहुत सी किस्में, बहुत सी टाइप्स और इसके बहुत से नाम हैं. लोन से बॉन्ड इस तरह मुख्तलिफ है कि बॉन्ड में डायरेक्टली इन्वेस्टर से पैसे लिए जाते हैं, जबकि लोन में लोगों का पैसा एक इंटरमीडियरी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता हुआ एक कंपनी के पास आता है. बॉन्ड सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, यानी किसी एसेट से मॉर्गेज करके उस बॉन्ड को सिक्योर किया जा सकता है, और ऐसे भी बॉन्ड्स होते हैं कि जो अनसिक्योर्ड होते हैं. कॉस्ट ऑफ बॉन्ड का मतलब यह है कि बॉन्ड होल्डर को जो रिटर्न, जो इंटरेस्ट कंपनी ने पे करना है वो कितना है, उसकी हम डिटर्मिनेशन करें. ये डिटर्मिनेशन इस पर डिपेंड करती है कि उस बॉन्ड की मार्केट में क्या प्राइस है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी ने क्या डिटर्मिन किया है. क्या वो फिक्स्ड है, क्या वो वेरिएबल है, क्या वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है. लेकिन कॉस्ट ऑफ बॉन्ड और कॉस्ट ऑफ लोन को अगर हम कंपेयर करें तो बॉन्ड की कॉस्ट अमूमन लोन की कॉस्ट से कम होती है. एंड द रीज़न इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लोन ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रॉफिट और द रिटर्न of the intermediary through which we get that financing. So the corporate bonds will have a certain cost, the government bonds, the municipal bonds, तो उन सब की कॉस्ट में ज़रूर फ़र्क होगा और वो उनके रिस्क प्रोफाइल या रिस्क लेवल की वजह से है. लेकिन बॉन्ड की कॉस्ट हमेशा लोन की कॉस्ट से कुछ कम होगी. कॉस्ट ऑफ बॉन्ड रेटिंग पर डिपेंड करता है. जैसे बॉन्ड ज़्यादा सिक्योर होता जाएगा, उसकी रेटिंग बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट कम होती चली जाएगी, क्योंकि हमने ये कहा है कि जैसे जैसे रिस्क कम होता जाए वैसे वैसे रिटर्न कम होता चला जाता है. बॉन्ड्स की बहुत सी किस्में हैं और अगर हम तमाम किस्मों का अहाता करें सो दैट विल बी अ लॉन्ग लिस्ट. बट द बेसिक टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कैन बी विद रेफरेंस टू द मैच्योरिटी or with reference to the coupon or the interest rate. There are certain bonds which have got no maturity. These are called perpetual bonds or no maturity bonds. Then there are bonds where there is no interest rate, and these are coupon bonds. And we'll talk about these coupon bonds later, that how the cost is calculated. And then there are coupon bonds, the bonds on which there is a specific rate of interest and there is no maturity of these bonds. Now, to calculate the cost of these bonds, we need to discount whatever is the return, whatever is the cash flow which is generated by these bonds. So, to discount that, there is a certain rate that we need to apply. Now, the rate determination is actually the calculation of the cost of bond, because there is a face value of the bond and there is a market value of the bond. हम जब भी ये कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे किसी बॉन्ड की, तो वो उसकी मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू के रेफरेंस से करेंगे. तो व्हाट वील डू इज दैट वी रिलेट द इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड विद द मार्केट प्राइस एंड वी सी दैट हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ द बॉन्ड विद रेफरेंस टू दैट एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस. इस तरीके से इस डिस्काउंटिंग के प्रोसेस के अंदर हम उन तमाम कैश इनफ्लोस को कंसिडर करेंगे जो कि एक बॉन्ड जनरेट करता है. We'll discount the interest. If a bond is issued for, let's say, 10 years, so the interest that we'll get over the 10 years, that will be discounted. And the maturity value, if the bond has a maturity value, that will also be discounted.
And in this way, the rate that we will get by making this discounted value equal to the market price, वो rate होगा जिसको हम cost of bond का नाम देंगे.